औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। 8th क्लास इंग्लिश ऑब्जेक्टिव पेपर पेक्टा एसबीए फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन पेपर आपको लिखवाने जा रहा हूं। आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, अच्छे तरीके से याद करना है। होपफुली अगर आपने इसको कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप पूरे नंबर ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 40 मार्क्स से आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, तो वो ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ सकती है। देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। इसमें देखिए रैपिंग है, रैपिंग डब्ल्यू इसमें साइलेंट है। चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। तो इसमें 4 इसके सिलेबल हैं। ये सिलेबल आपको पढ़ाए थे। अगर आपको नहीं पता कि सिलेबल क्या होते हैं तो इसके ऊपर मेरे वीडियो मौजूद है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा या यहाँ पे आई में जो कार्ड इसका ऐड कर दूंगा। सेलेबल क्या होते हैं, सेलेबल कैसे बनते हैं, उनके हम डिवीजन कैसे करते हैं, सेलेबिक डिवीजन, तो वो आपने देख लेनी है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ये लफ्ज है एफिलिएटेड, तो इसका करेक्ट ये लिखा हुआ है एफिलिएटेड। रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्लियर जी? जी। आगे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। क्रिएट का क्रिएटिव होगा, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तो ये मेटाफोर है, मेटाफोर कहते हैं हम किसको, इस्तारा को, जिसको हम डायरेक्टली किसी से उसे तशबीह दे देते हैं। अगर आ जाए हमारे पास से मेरी, तो वो हमारे पास एज, लाइक, इस तरह का यूज होता है। व्हाट इज द connotative meaning of the word blue in the following sentence? She has been feeling blue ever since her best friend moved away. She is feeling unhappy. ठीक है ना। You complete the base word grand with the correct option to make a compound word. Grandmother, grandmother. Identify a word containing a suffix. Suffix हमारे पास क्या है? Happiness। एक होता है prefix, एक होता है suffix। Suffix होता है हमारे पास लाहिका और प्रीफिक्स होता है साबका। तो ये नेस बाद में लगा है, हैप्पी के साथ नेस हमने लगाया है। चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट एंटोनिम ऑफ एप्रिशिएट। एप्रिशिएट तारीफ करना, क्रिटिसाइज तनकीद करना। जी आगे हमारे पास एक क्या है? चूज द सेंटेंस रिटन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंसेस आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने पढ़े हुए हैं, गुड, नहीं पढ़े तो मेरे चैनल के ऊपर टेंसेस की वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, उनको आप देख लें, जिनमें कौन सी टेंस की उसकी पहचान क्या है, निशानी क्या है, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, सब्जेक्ट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट क्या कहाँ आता है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, नहीं करते, और फर्स्ट पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर प्लूरल में क्या क्या लगाते हैं, किस तरह, सारा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो जी ये है, शी हैड प्लेड हर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। Complete the sentence with the correct option. The school has improved significantly since last year. ये since और for का भी यूज आपको बताया था कि since का और for का भी इस्तेमाल होता है। Identify the type of the following sentence. A loss. We have lost the match. तो ये exclamatory है। हमने आपको पढ़ाया था कि types of sentence डिक्लेरेटिव या इंफॉर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, इंपेरेटिव क्या है। तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है जी। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक्स इंग्लिश मोर क्लियरली देन हिज क्लासमेट्स। क्लियरली, क्लियरली, क्लियरिंग, क्लियरली, ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। Complete the given sentence with the correct conjunction. My teacher always supported and guided me whenever I needed. क्या आएगा? Whenever, जब कभी। Identify the tense in the following sentence. The students were participating actively in the English debate competition. Past continuous tense है ये। Were participating, were लग गया और उसके साथ participating fourth form लगी है हमारे पास, ठीक है ना जी। Fill in the blank with the appropriate definite article. I saw a lion in the forest. The lion was chasing a deer. ये एन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया है। Choose an intransitive verb from the following sentence. Sana got up early in the morning and prepared herself for school. Got up. Identify the sentence having superlative degree of an adjective. तो ये आएगा, he runs the fastest in the football team.
एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। Identify the sentence with the correct use of semicolon. He wanted to go to the park, semicolon. However, it was closed for a renovations. तो हमने कहा पढ़ाया था आपको सेमीकोलन, कॉलन का यूज क्या होता है, सेमीकोलन वहां लगा जब दो मुख्तलिफ सिचुएशन को आपस में जोड़ा जाता है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउज, तो ये है एडवर्ब क्लाउज। चूज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड फेब्रुअरी, फेब, फरवरी का हम फेब लिखते हैं ना। Identify the correct indirect speech of the following sentence. So she said that she would cook dinner for her family. I will cook dinner for my family का indirect ये बनेगा। Fill in the blank with the correct modal verb. तो यहाँ पे must आएगा। Asa speak English fluently. He must have lived in England for many years. Identify the word that means lack of food and grains. So famine, कहत। Choose an adverbial phrase. Sarah ate her breakfast dash because she was late for school in a hurry. You should finish your work immediately. Please finish your work immediately. Identify the homophones in the following sentence. The hair is running here and there. Here and there. These are the homophones. Identify the sentence in future continuous tense. She will be writing. Identify the figure of speech used in the given sentence. After completing their work, they slept like a log. Simile. Identify the sentence with the correct use of apostrophe. The children's toy are scattered. जब हमारे पास जमा हो तो हम उस एस के बाद लगाते हैं, ठीक है ना जी। एपस्ट्रॉफी आपको समझाया पढ़ाया था। देखिए कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, तो इसको थोड़ा सा स्पीड से समझा रहा हूँ, आपने इसको स्लो करके पॉज करके देख लेना है। गुड हो गया जनाब जी। विच पेयर ऑफ द वर्ड हैज होमोग्राफ्स, लीड। Select the correct meaning of idiom spill the beans, reveal a secret. Identify the type of given sentence, imperative है। Go get me some tea and biscuit, ये हुक्म दे रहे हैं तो imperative होगा। Identify the sentence which remain is used as a linking verb. He always remains positive about the future, ये linking verb है जी। आपके पास एक स्टैंजा दिया जाएगा, पोएम दी जाएगी, ठीक है ना। फॉलोइंग स्टैंजास, दो स्टैंजे आपको दिए गए हैं, उसमें आप पढ़ना है। वाटर इज लवली थिंग, डार्क एंड रिपली इन स्प्रिंग, डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल, in a puddle brown and cool, in the river blue and gay, in a raindrop silver gray, in a fountain flashing white, in a dewdrop crystal bright. So in the line dark and ripply in a spring, what does ripply describe about the water? The water's movement. Ripply तेज से चलना. How does the poet try to prove that water is a lovely thing, identifying its presence everywhere, हर जगह? Which line expresses the joyful tone in the river blue and gay? What is the effect of the water being dark and quiet in a pool? It suggests a sense of stillness and calmness. In what type of setting do the first two stanzas mainly focus on water, small, natural, and contained sources? जी कुछ और आपको ऑब्जेक्टिव लिखवा रहा हूँ, ये आपके एसबीए पेपर में खास तौर पे इंतहाई अहम है और पेक्टा में भी आ सकती हैं, तो आप समझ लें, देख लें। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड सक्सीड, तो सक्सेसफुल इसका एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन इंट्रांजिटिव वर्ब, द बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड appetizing, tasteful. The cake looked yummy and appetizing, tasteful. Identify the uncountable noun, intelligence है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ये नाउन की टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हुई ग्रामर में, वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं, वो देख लिया करें। इसलिए आपको कहता हूँ कि वीडियोस तमाम देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के वो भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अच्छे नंबर लेने, बेहतरीन पढ़ना है तो। आई विल हेल्प यू विद योर वर्क आफ्टर फर्स्ट आई नीड टू फिनिश माइन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद जी, तो इसका आंसर होगा रीडिंग एंड राइटिंग डिफर। आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन भी आ गया और रीडिंग भी आ गया। द बर्ड्स विल हैव फ्लोन टू द साउथ बिफोर विंटर, विल हैव क्या है, जमा है, प्लूरल है तो विल हैव लगेगा। चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्बियल फ्रेज,
I visited him yesterday evening. Identify the sentence with the correct use of semicolon. I was tired. I slept early. ठीक है ना, दो चीजों को उसने मिला दिया है. Identifying the sentence type after we went to the store. She bought some books. Complex. Both the drivers were on leave, so I decided to drive the car myself. I के साथ myself. Identify a compound preposition from the following option. Across. Identify the word with diphthong loyal. Change the narration of the following sentence correctly. Zahid said, I will bake a cake for your birthday. अब इसकी narration जब change करें, Zahid said that he would bake a cake from my birthday. जी, Aslam not only hit a six but also make the team won the match. Identify the underlined clause. He stayed at home because he was ill. Adverbial clause. Choose a sentence that has a transitive verb. I opened the door. Identify the triphthong from the following five. Identify a pair of the capitonium. Capitonium देखिए मार्च हमेशा कैपिटल में आता है, लेकिन यहाँ पे छोटा दिया गया है. समझ आ गया ना. Which of the following is an example of personification? The city was awake all night. Identify the sentence with the use of alliteration. Black bug bit a big black bear. Identify the noun phrase in the following sentence. The famous old museum. Identify the literary technique and use in the given. After the wash, her old clothes looked as white as snow. As लग गया तो ये शामिल हो गया. Similarly, smell. Identify sentence with the action verb. They built a new house. Identify sentence which is related to a hyperbole. I told you a million times to reply. Select a sentence with a modal verb of possibility. I can play game during break time. Possibility है ना. अब ये देखें, ये आपको कुछ stanzas दे दिया गया है, stanza 1, 2 and 3. अब इनको आपने पढ़ना और इसमें से फिर आपने इसके आंसर देने. तो मैंने आपको आंसर टिक करा दिया. According to the poem, why is every person work important? It contributes to society. Pick the meaning of from the farmers in the field of wide physical strength and endurance. What's it suggested about the type of work in the poem? All work is equally valuable. Which words describe the tone of the poem in a better way? Inspirational. What is the main theme of the poem? The value and dignity of all types of work. Identify the adjective of the word succeed. तो जिससे पहले हो चुका है. Identify the sentence having intrusion where the birds are chirping melodiously. Identify correct meaning of the underlined word. Kindness, goodwill. Identify the uncountable noun. Advice. We can't go for a walk until it stop raining. Identify the sentence with reading and writing differ. ये पहले करा चुका हूँ. Identify the sentence present perfect tense. I have been speaking English for 2 months. They will have cleaned their classroom. Choose the sentence with an adverbial verb. She came home last week. Identify the sentence with the correct use of semicolon. I was tired. I slept early. G. Identify the sentence. The patient had left before the doctor came. Complex. Both the drivers were on leave. Myself. Identify compound preposition. Beside. Word with a diphthong. Higher. Pick the correct indirect form. He said to me, do you need help? He asked me whether I need help. Shakespeare was not only a dramatist but also a poet. Identify the underlined clause. Because he was ill. Adverbial clause. Choose a sentence that is a transitive verb. The boy kicked the ball. Identify the triphthong from the following player. Choose a sentence that has a capitonium. Polish, Portugali. Which of the following is an example of personification? The city was awake all night. Which of the following sentence contains alliteration? The sun shone smoothly. Identify the noun phrase. The children. Identify the literary technique. ये आ गया. Identify the sentence with the action verb. They built a new house. Identify sentence. I could sleep for a year. Select a sentence with a modal verb. They might go on a study tour. The yes, दो तीन sentence बता दिए गए. इनके answer what will guide you to go to the place. Education. How can study help you? Trains the brain. What can make your mind relax? Playing games. What is suggested by the poet is to ignore
others look. Identify the suitable title for the poem A Day from Student Life. G. Identify the adjective of the word reliable. Identify the sentence having intransitive of the baby cried as he fell down. Identify the correct meaning of underlined word energetically, efficiently, and uncountable noun information. We can't go for a walk until G. Reading and writing differ. ये हो चुका. Identify sentence present perfect. They have been playing cricket since morning. They will have clean हो गया. Choose the sentence with the adverbial phrase. She came home last week. Identify the sentence with the correct use of semicolon. She was worked hard. She succeeded. Sentence the patient had left the borough. ये complex हो गया. ये माई सेल्फ पहले बता चुका हूँ. ये कुछ रिपीटेड चीज द नरेशन फ्रॉम जहद ये हो चुका है. जैन इज नॉट ओनली a doctor but also a successful businessman. Identify the underlined clause, adverbial clause, transitive word. She completed the assignment. Triphthong इसमें player है. Choose a sentence with her capitonium. Polish आ गया. Which of the following is an example of personification? The city है भाई, ये पहले हो चुका है. G. Identify the sentence with the use of alliteration. The candy was killing my cavity. G. The famous old museum ये हो चुका. Literary ये पहले हो चुका है. जी. अब यहाँ पे एक्शन वर्ब दफ्तार पोर्स. Build the Ranikot fort. Identify the sentence which is related to hyperbole. I smell a million flowers. Select the sentence with the modal verb. They might go for a study tour. जी. ये आपके पास पोएम आ गई. वो लव, इसके आंसर वो लव कंट्री, द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंड, द फ्रेज mountains high to ocean wide. जी. Identify the tone of the poem joyful. Identify the meaning of the phrase of the whether the united unity and togetherness. What is the main theme of the poem? Love for one's country. अच्छा जी. Identify adjective. यहाँ पे transform का transformer और keeping mind distance. They decided pick the clothes themselves. ठीक है ना, themselves आ जाएगा. तो ये जनाब आपका ऑब्जेक्टिव हो गया. कोशिश की है मैंने मैक्सिमम इसमें कवर कर सकूं ताकि इतनी वीडियो भी लंबी ना बने. तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना, याद करना है और इसके पैटर्न को समझ लेना है. आप इसकी मिलती जुलती और भी तैयारी कर लेंगे तो आपका पेपर होपफुली पूरा हो जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपके पास आते रहें. आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती रहेगी. 9th क्लास जा रही है तो वो भी हम करेंगे. चलें जी, अल्लाह हाफिज.